अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, ये जो यूपीआई का आप बारकोड देख रहे हैं ना, ये मेरा ही यूपीआई का बारकोड है मयंक तिवाड़ी के नाम से। मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं कि ये मयंक तिवाड़ी के नाम से क्यों है। तो देखें, मैं पाकिस्तान बॉर्न हूँ, मेरे पास इंडिया का अकाउंट खोलना या इंडिया का मोबाइल रखना मुनासिब नहीं है, मतलब इजाज़त नहीं है मुझे। तो फिर मेरे ये मयंक है जो मेरा सारा काम देखते हैं, और मेरे ख़ास तौर पे एशियन ह्यूमन राइट्स फोरम के हवाले से हम जो न्यूज़ लेटर वगैरह बनाते हैं वो सब मयंक बनाते हैं। उनका टेक्स्ट मैं तैयार करता हूँ जो लिखा हुआ होता है, लेकिन वो सारी फॉर्मेटिंग वो करते हैं। जितना डिजिटल काम है ना मेरे चैनल का, न्यूज़ लेटर का, वो सब मयंक देखते हैं। और मेरे उनके बड़े फैमिली वाले संबंध हैं। आप जिस तरह मुझ पे ट्रस्ट करते हैं ऐसे ही मयंक पे ट्रस्ट कर सकते हैं, और ये यूपीआई को यूज़ कर सकते हैं। आपकी सहायता से ही हम चलते हैं। थैंक यू। अजीज़ दोस्तों, इस बार विजयदशमी पे भारत के प्रधानमंत्री ने जो मैसेज दिया है भारतीयों को, वो ये कहा है कि आप 10 रेजोल्यूशन अपनी ज़िंदगी में लाएं। आने वाली नस्लों के लिए पानी बचाएं, डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने के लिए लोगों में कोशिश करें, सफाई बेहतर करवाएं, लोकल सामान खरीदने को तरजीह दें, यानी भारत मेड, क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश करें। पहले भारत देख लें, इसके बाद बाहर घूमने जाएं। फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग के लिए एजुकेट करें। श्री अन्न अपनी डाइट में शामिल करें, फिटनेस को प्रायोरिटी दें, और अंडर प्रिविलेज फैमिली को एम्पावर करें। ये 10 रेजोल्यूशन दिए हैं। भारत की ओपोजिशन पार्टियां जितनी भी हैं ना, उनके रेजोल्यूशन आपको मिलेंगे। बीजेपी, आरएसएस, हिंदुत्वा, कास्ट सिस्टम, ये वो, उनकी पॉलिटिक्स और इनकी पॉलिटिक्स में ये फ़र्क देखें। अजीज़ दोस्तों, कनाडा के ओपोजिशन लीडर ने कहा है कि जिस दिन मैं प्राइम मिनिस्टर बना, इंडिया के साथ वैसे ही पुराने ताल्लुकात हो जाएंगे। अजीज़ दोस्तों, एक खबर भारत के हवाले से शेयर करके फिर मैं अपने मेन टॉपिक पे आता हूँ कि गुजरात में पुलिस ने टीचर और मदरसा के ट्रस्टीज़ को अरेस्ट किया है, क्योंकि वो बच्चों के ऊपर हैरेसमेंट, जुल्म करते थे, अत्याचार करते थे। इसलिए मुफ्ती दाऊद फ़कीरा 52 साल और मौलाना अब्बास 25 साल जेल में भेज दिए गए हैं। अजीज़ दोस्तों, गुजरात के हवाले से ये जूनागढ़ के डिस्ट्रिक्ट में एक टीचर, 25 साल टीचर को मदरसे से अरेस्ट किया गया। उसने 10 छोटे छोटे बच्चों का सेक्सुअल असॉल्ट किया था। इसको सूरत से गिरफ्तार किया गया, जो गुजरात के जूनागढ़ के मदरसे में इसने ये कांड किए थे। ये भाग गया था, सूरत के मदरसे से अरेस्ट किया गया। अजीज़ दोस्तों, योगी जी ने कुछ मदरसों में गलत कामों की वजह से उनको रोज़ के 10,000 रुपया जुर्माना लगाया है और उनके मदरसे बंद करने का ऑर्डर दिया है। अजीज़ दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। मदरसों की सफाई आप जितना जल्दी करेंगे, जितना ज़्यादा करेंगे, इतना सोसाइटी की सफाई होगी और अच्छी सी सफाई होगी। अजीज़ दोस्तों, एक और छोटा सा आपके सामने पॉइंट रखूँगा कि एक जितने मुसलमान हैं ना, खाली इंडिया के नहीं, पाकिस्तान और पूरी दुनिया के, वो गुजरात राइट्स, गुजरात में मुसलमानों का जेनोसाइड लगातार आज 23 साल 21 साल बाद भी इसकी पिपोड़ी बजाते रहते हैं।
लेकिन हैरत की बात है कि इतना अत्याचार मुसलमानों पर गुजरात में हुआ, फिर भी एक मुसलमान वहाँ से माइग्रेट करके नहीं किया, कोई मुसलमान गुजरात छोड़ के नहीं किया कि मुंबई चला जाता या दिल्ली चला जाता कहीं। लेकिन श्रीनगर में, कश्मीर में 5 लाख हिंदुओं को अपने पुरखों के घर छोड़ के, ज़मीन छोड़ के जाना पड़ा। आपको ये लेफ्ट का इकोसिस्टम गुजरात की पीपौड़ी बजाते मिलेगा, लेकिन जब आप इनके सामने कश्मीरी पंडितों का केस रखेंगे तो वो कहेंगे कि ये तो इस्लामोफोबिया है, ये तो हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म है। एनीवे, अजीज दोस्तों, 2 शहर हैं हैदराबाद, एक पाकिस्तान का हैदराबाद है, एक इंडिया का हैदराबाद है। हैदराबाद जहाँ तक मुझे याद पड़ता है हैदर अली के नाम पे था। हैदर अली टीपू सुल्तान का बाप था, एक तुर्क गुलाम था ऑटोमन एम्पायर का। उसको उसकी गुलामी से खुश होके, क्योंकि ज़्यादातर गुलाम है ना होमोसेक्सुअल होते थे, ये जितने मुसलमान बादशाह गुजरे हैं ये होमोसेक्सुअल होते थे। तो जो अपने खलीफा को जो गुलाम ज़्यादा खुश कर देता था उसको फिर ज़मीनें जागीरें दी जाती थी। तो हैदर अली को इंडिया में जागीर दी गई थी और ये इंडिया आया था और फिर ये टीपू सुल्तान, इसका बेटा भी बादशाह बना। तो मेरा ख्याल है कि हैदर अली के नाम पे ये दोनों हैदराबाद के नाम पे बने हैं। एक है पाकिस्तान का हैदराबाद, ये है पाकिस्तान का हैदराबाद, तबाह सिटी, सिंध का दूसरा बड़ा शहर है कराची के बाद। और पीपल्स पार्टी यहाँ पे पिछले 50 साल से मोस्ट ऑफ द टाइम रूल करती रही है। हैदराबाद शहर में एक यूनिवर्सिटी तक नहीं है। आप अंदाजा लगाएं, सिंध का दूसरा बड़ा शहर है। और एक है भारत का हैदराबाद। अब आप भारत के हैदराबाद को आप देखेंगे तो आप कहेंगे ये तो यूरोप है। और आईटी में टॉप पे जा रहा है। इंडिया में बंगलोर, हैदराबाद, पुणे आईटी के हवाले से मशहूर हैं। भारत के हैदराबाद के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड और पाकिस्तान के हैदराबाद के लिविंग स्टैंडर्ड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये अवैसी के पूर्वज, इसके दादा और ये हैदराबाद के मुसलमान इसको पाकिस्तान बनाना चाह रहे थे। आप सोचें कि अगर ये हैदराबाद पाकिस्तान का हाथ में होता तो इसका क्या हाल होता। वही हाल होता जो पाकिस्तान के हैदराबाद का है। तो अजीज़ दोस्तों, ये मैं कंपैरिजन रखना चाह रहा था कि देख लें भारत ने हैदराबाद को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और अगर यही हैदराबाद एक मुस्लिम स्टेट होता तो ये काबुल पाकिस्तान के हैदराबाद से मुख्तलिफ ना होता। और एजुकेशन यहाँ पे मदरसों की होती। और बदकिस्मती से हैदराबाद में, इंडिया के हैदराबाद में आज भी ज़्यादातर मुसलमान अवैसियों जैसों के झांसे में आके मदरसा एजुकेशन और बैकवर्ड रहे हैं। क्योंकि जब तक ये बैकवर्ड होंगे, देखिए किसी फिलोसोफर ने कहा था कि एजुकेशन है ना वो अवेयरनेस लाती है। इसीलिए आप देखें कि मुस्लिम कम्युनल लीडर्स हैं ना, वो मुसलमानों को मदरसा एजुकेशन तक लिमिटेड रखते हैं। तो मदरसा एजुकेशन जब पूरा रिफॉर्मिंग हो जाती है, अंदर पूरा मदरसा की एजुकेशन बैठ जाती है और आदमी का पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है, हार्डवेयर बन जाता है वो, इसके बाद आप फिर इसको यूनिवर्सिटी में भेजें, कहीं भी भेजें, उसका जो अंदर हार्डवेयर है ना वो चेंज नहीं हो सकता। तो ये बदकिस्मती से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के जो मुस्लिम कम्युनल लीडर्स हैं ना, ये एजुकेशन से आम जनता को दूर रखते हैं ताकि वो इनसे सवाल ना करें कि आपके बच्चे तो अमेरिका, यूरोप में पढ़ते हैं, आपके बच्चे मदरसों में क्यों नहीं जाते। ये सवाल ना करें कि अरफा खानम शेरवानी, राना अयूब, तुम तो वेस्टर्न ड्रेसेस पहन के अमेरिका, यूरोप की रोज़ सैर सपाटे करते हो,
तुम लोगों ने तो मदरसे में एजुकेशन हासिल नहीं की, तुम लोगों को तो ढंग से नमाज पढ़नी नहीं आती, लेकिन तुम लोग एडवोकेसी करते हो पर्दे की, बुरके की, मदरसा एजुकेशन की। तो ये फ़र्क आपके सामने लाना था। ऐसे ही जैसे ये कश्मीर में भारत ने जो ट्रेन चलाई है, ये आपके सामने है ट्रेन। अब आप ये देखें कि कश्मीर भी अगर पाकिस्तान के हिस्से में जाता तो ये ट्रेन चलती। ये भारत कश्मीर में एक रिवॉल्यूशन लेके आया है। वहाँ पे टूरिज्म, हालांकि इतना टेररिज्म हुआ, अगर ये टेररिज्म ना हुआ होता पाकिस्तान बैक्ड और पूरा कश्मीर भारत के पास होता, पीओके गिलगित बल्तिस्तान, तो शायद आज दुनिया का टॉप का टूरिस्ट डेस्टिनेशन होता। कि जो चीज़ गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, लद्दाख में है, वो यूरोप में स्विट्ज़रलैंड वगैरह के पास भी नहीं है। अगर वहाँ पे पाकिस्तान ने जंग ना की होती और कब्ज़े ना किए होते और चाइना का वहाँ पे हिसाब किताब ना होता और एक पीसफुल एटमॉस्फेयर मिलता जैसा कि स्विट्ज़रलैंड को मिला है, तो इस इलाके ने बहुत तरक्की करनी थी। लेकिन इसके बावजूद ये जब से करंट सरकार ने 9-10 सालों में जो कश्मीर में करके दिखाया है, वो काबिल तारीफ़ है। और ये जो ट्रेन आप देख रहे हैं, ये कश्मीर की ट्रेन है। मेरी बात हो रही थी मीरपुर के हमारे चौधरी शब्बीर साहब से, डॉक्टर चौधरी शब्बीर साहब से, तो उन्होंने कहा कि मेरे घर के पास मीरपुर में ट्रेन चलती थी। तो मैंने कहा थी का क्या मतलब? तो बोला अब नहीं, अब तो वो ट्रेन की पटड़ियाँ भी उठार के लेके गए और वो बोगियाँ भी वो सारी आयरन फाउंड्रीज में पिघला दी गई। सिरे से ट्रेन है ही नहीं पाकिस्तान, पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिरे से ट्रेन नहीं है। भारत ने कश्मीर में ये इनकलाब लाया है। अजीज दोस्तों, एक छोटी सी इंटरनेशनल खबर आपके साथ शेयर करूंगा कि चाइना का पहले फॉरेन मिनिस्टर गायब हो गया। चाइना ने ऐलान कर दिया कि फॉरेन मिनिस्टर चेंज कर दिया, कुछ महीनों तो गायब रहा, फिर अचानक ऐलान कर दिया, चेंज कर दिया। अब डिफेंस मिनिस्टर जो है वो 2 महीने से गायब है। अब अचानक ऐलान कर दिया कि डिफेंस मिनिस्टर को रिज़ाइन कर दिया है और अब दूसरा। सवाल ये पैदा होता है कि ये रिज़ाइन करने के बाद, जैसे अमेरिका के हिलरी क्लिंटन है एक्स फॉरेन मिनिस्टर, जेम्स बेकर है, ये मैडलिन एल्ब्राइट हैं, जितनी है कोंडोलीजा राइस हैं, ये सब तो आते हैं इंटरव्यू वगैरह देने के लिए। तो ये चाइना के गायब कहाँ हो जाते हैं फिर? चलो रिज़ाइन कर दिया, निकाल दिया, चलो ठीक है, गायब कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल गायब, कोई अता पता नहीं। तो अजीज दोस्तों, ये है चाइना। जैसे जैक मा गायब, बहुत ज़्यादा शोर हुआ तो इसको बीच बीच में 6 महीने साल में एक बार ये शक्ल दिखा देता है, कोई इंटरव्यू नहीं देता, कोई कुछ नहीं। ये है चाइना। फ़र्क जान के जिए। अजीज़ दोस्तों, एंड पे मैं आपके सामने ये 10 मिनट की वीडियो रख रहा हूँ ब्रिजिट गैब्रियल की। ये लेबनीज़ लेडी हैं जिनकी वीडियोस में पहले भी शेयर कर चुका हूँ। इन्होंने अभी अपने बारे में कुछ चीज़ें वाजे की हैं, कुछ बताई हैं कि लोग जानना चाह रहे थे कुछ बातें उनके हवाले से, उनकी एजुकेशन के हवाले से, क्यों वो इतना ज़्यादा मुसलमानों की पोलें खोल रही हैं। तो ये 10 मिनट की वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एंड पे। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों, काइंडली कीप सपोर्टिंग। थैंक यू। Hello everybody, and thank you for joining me. My name is Brigitte Gabrielle, and I wanted to share with you my story. I realized yesterday when I put a post about my background that many of my new followers and people who know me as a political commentator who's always commenting on political events and current events, that a lot of people have no idea about my background and why I am so passionate speaking the way I speak. But let me share with you my background, and you'll understand where this passion comes from, and why this week has been so difficult for me watching what's happening in the Middle East.
You see, I was born and raised in Lebanon, which used to be the only majority Christian country in the Middle East. We were open-minded, we were fair, we were tolerant, we were multicultural. We prided ourselves on our multiculturalism. We had open borders. We welcomed everyone into our country because we wanted to share with them the westernization which we had created in the heart of the Middle East. Lebanon became Paris of the Middle East, banking capital of the Middle East. Unfortunately, all that began to change when we accepted a wave of refugees into our country, people who did not share our values, but wanted to use Lebanon as a launching pad to kill the Jews and drive them into the sea. Lebanon was the only country in the Arabic world that accepted the third wave of Palestinian refugees. When they came to our country, they wanted to destroy our country. They ended up destroying our country. My 9/11 happened to me in 1975 when radical Islamic Palestinians blew up my home, bringing it down, burying me under the rubble wounded. I ended up in a hospital for 2.5 months. And as I laid in a hospital bed, hooked up to IVs, I would ask my parents, why did they do this to us? And my parents would tell me, because we are Christians, they consider us infidels and they want to kill us. So I learned since I was a 10-year-old little girl that I am wanted dead simply because I was born into the Christian faith and lived in a Christian town. We ended up leaving the hospital and coming back home, but my home was no longer the home I left. I ended up living in a bomb shelter underground in an 8x10 room without electricity, without water, and very little food. And that's where I lived for the next 7 years of my life, from the age of 10 till the age of 17, robbed of my youth. The Palestinian Islamists cut off all water supplies to our town, cut off electricity, cut off food. In order for us to go out and get some greenery, we would go out and dig out dandelions and different greenery that grew around our bomb shelter because it was the only salads we had to eat. To get some water, we would crawl into a nearby spring to get some water because we were surrounded by Islamic Palestinian snipers shooting at us. And every time we left our bomb shelter to the spring to get water, we would say our last goodbyes because we did not know if we're going to come back alive or dead just to get some water. This became my existence. I remember a few years into the war, in the beginning we thought it's going to be a couple weeks, and then everybody's going to see the massacres that the Palestinians are doing to the Christians in Lebanon, how they put their heads together with the Muslims in Lebanon and declare jihad on the Christians, the massacres of children, the slaughter, even the crucifixion of Christian men on crosses. One of the famous city massacres was in the city of Damour in Lebanon, where they massacred the whole town. This barbarism, this Palestinian barbarism is not new. My father would say, all the Christian nations are going to wake up and see what's happening to Lebanon, to the Christians, and they're going to come save us. But nobody came and the world forgot about us. I remember 3 years after living in the bomb shelter, I was 13 years old, and one of our militia, one of our Christian friends stopped by. And he said to me, Brigitte, we heard a lot of chatter on the radio, and we believe tonight we are going to be slaughtered. And he said, if I don't see you tomorrow, I wish you a merciful death. And he left. And I remember at the age of 13, dressing in my Sunday best, my Easter dress, because I wanted to look pretty, because I knew that when they come to slaughter me, there would be no one to bury me. And I wanted to look pretty when I'm dead. And I remember my mother combing my long black hair as I sobbed, begging her, I don't want to die. I'm only 13 years old. Please do something. I don't want to die. And there was nothing my mother could say to me.
And I remember sitting in the corner of our bomb shelter, and my father started reading from Psalms. I shall walk into the valley of death and fear no evil, for thou art with me. And my parents said to me, when they come to slaughter us tonight, we will create a distraction. You're an only child. You're a young child. We lived a long life. We will create a distraction, and you just run towards Israel. Run towards the Israeli border and don't look back. You see, we knew if we run to the Jews and beg for help, the Jews are not going to slaughter us because we had more shared values with them than we had with the Muslims. Thank God I did not have to make that decision that night, because that's the night when Israel came in physically into Lebanon and established the security zone and kicked out the radical Islamic Palestinian element that surrounded our town. And Israel set up artillery bases in the hills surrounding our town. And that's how we survived for another 5 years, until 1982, when Israel invaded Lebanon, working with the Christians, trying to help the Christians take back their country, take back their democracy, and kick out the radical Islamic element that had taken control of the country at that time. We had 11 Islamic terrorist organizations operating out of Lebanon, including the PLO, the Palestinian Liberation Organization. And Israel finally ended up kicking Yasser Arafat and his cronies all the way to Tunisia. And that's how we came out of the bomb shelter and back to rebuilding our lives. I ended up moving to Israel in 1984 and becoming a news anchor for World News in the Middle East, covering world events, because I wanted to make it my life's mission to fight evil, to understand how can people hate so much to commit such atrocities. My life story is detailed in a book titled Because They Hate. A survivor of Islamic terrorism warns America. The book sold over 1 million copies. It came out in 2006. I encourage you to read it. I encourage you to order it so you can understand why I fight terrorism, why I speak with such passion and conviction. People who watch me debate people and fight people and care less about the labels people throw at me. They call me radical. They call me a hater. I don't hate anybody. I pray for the Middle East. Today I'm praying for the Jews, for the Palestinians, for the Lebanese, for the innocent people who are dying or who are going to die because of the work of Hamas, because of the work of Hezbollah, because of the work of Iran, because of the crazy radicals who want to kill, who want to create mayhem on the world. We must stand up against barbarism. Barbarism done in the name of any people, of any religion, is not acceptable. Barbarism is when you shoot babies in their cribs. Barbarism is when you decapitate babies. Barbarism is when you rape women and kill them. Barbarism is when you kidnap old grandmas and you kidnap children and you put them in cages with the sole purpose of torturing them and killing them. This is barbarism, unacceptable under any name, from any people, from any religion. That's why the good people need to stand up against terrorism, against Islamic terrorism. Because what starts in the Middle East doesn't end in the Middle East. What starts in Israel doesn't end in Israel. This is a war against between barbarism and civilization. This is a war between democracy and dictatorship. This is a war between goodness and evil. We either win or they win. We need to fight to win. We need to stand up with Israel to win. This is our fight and we must win it.